हेलो फोक्स एंड वेलकम टू गेम ऑन है। मैं हूं फखर आलम और आप सबको हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन फॉर द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2019 में एक बार फिर और शायद आखिरी बार खुशामदीद कह रहा हूं इस साल इस वर्ल्ड कप पे। इट इज द डे ऑफ जजमेंट, द डे व्हेन वी विल फाइंड ए न्यू चैंपियन इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, और विल वी? Because there is a slight question mark when it comes down to weather. जी हाँ दोस्त, बदकिस्मती से इस वक्त लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में माहौल जो है वो कुछ गीला गीला सा है। तकरीबन वैसा ही माहौल जिस तरह इस वक्त ज्यादातर पंजाब में है, हर तरफ बारिशें हो रही हैं। जिस तरह रात को इस्लामाबाद में था, हर तरफ बारिश हो रही थी। कुछ इस टाइप का माहौल चल रहा है इस वक्त, बट दैट्स हाउ इट इज। हाउएवर, इट इज द डे। आज इंग्लैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड फाइनल खेलेंगे 2019 के मेंस वर्ल्ड कप का, और दोनों टीमें इनमें से जो भी जीतता है वो पहली दफा वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। अगेन सवालिया निशान ये है कि क्या आज ही बनेगा? मौसम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और गुफ्तगू बढ़ाने के लिए सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय पैनलिस्ट विद मी इन द स्टूडियो, बिकॉज वी आर एट द लॉर्ड्स, द हाउस ऑफ क्रिकेट, द होम ऑफ क्रिकेट. This is where the man sitting on my right was the double centurion at the Lord of Lords and Pakistan's national team coach, former chief selector, and all-around a great personality, Mr. Mohsin Khan. Mohsin bhai, good morning. Welcome. Thank you very much. Thank you. Great to have you here. Thank you very much, and thank you very much for your kind words. Always, sir. You earned them. I mean, as a legend, you earned them. It's not that I'm just saying it. I have to say it because it is how it is. And with that, and you are looking very smart. Thank you, sir. Thank you very much. बहुत shukriya, sir. And with him, one of the finest wicket keepers of the game has seen, got great golden gloves behind the stumps and keeping for some of the most fastest pacers in the game. Led Pakistan team as well. Coached Afghanistan, has got a great insight into the game of cricket. Janab Rashid Latif bhai. Rashid bhai, good morning and welcome to the final. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. कैसे हैं? बहुत खुश आमदीद. All good? Zabardast. With me, ladies and gentlemen, is the legend himself, the fastest and the most feared bowlers in the game of cricket, the fastest growing YouTuber in the history of Pakistan, and an all-round great human being, Mr. Shoaib. Good morning, Shoaib. Good to have you here, buddy. Thank you, sir. Welcome. With him, ladies and gentlemen, the alpha male himself, the tribesman, the Zulu warrior who took on all challenges that came to his team all by himself, with the bat or the ball, would turn a game on its head. Mr. Lance Cruiser. Good morning, Lancey. Good morning. I believe you have well rested last night. Indeed. Yes. Yes. No, I believe so. That's good, right? I went to bed early. I suppose 8 o'clock in the night. Yeah. He was early to bed because it was the final. Someone's got to be fresh. Very good. Absolutely. Real professional. Yeah. Absolutely. And with us in the studio, ladies and gentlemen, the man who knows the history of the game inside out, the numbers, the facts, the figures, and things that most of us will never know because he's done so much research into the game. He's a great custodian of the history of the game of cricket. Gives me great pleasure to have him in the studio, Dr. nauman sahab. Doctor sahab, good morning. Good afternoon, Fakhr. Rather good afternoon. हमारी तो morning ही हुई है वैसे आपस की बात। अच्छा, फखर भाई, अगर ये मैच वॉश आउट हो जाता है कल भी, फिर क्या होगा? दोनों ट्रॉफी ग्राउंड में नजर रूल्स साहब ने जो है वो हमें खबर बताई है कि जो नए कवानीन हैं उसके मुताबिक अगर आज बारिश हो जाती है तो कोई रिजर्व डे नहीं है। नहीं, रिजर्व डे है। रिजर्व डे में भी अगर मैच वॉश आउट हो जाता है, देन इंग्लैंड विल बी द वर्ल्ड चैंपियन। यानी कि ब्रॉडकास्टर की चीखें निकल जाएंगी। ब्रॉडकास्टर की चीखें निकल जाएंगी बुनियादी तौर पे। ये सेमीफाइनल्स में भी रखा हुआ था और फाइनल्स में भी ये रखा। अच्छा, अगर कल रिजर्व डे पे चली भी जाती है कहानी तो आज जो हम पोस्ट और प्री कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी ना, हमें दोबारा तो नहीं ना करनी पड़ेगी, यही लगा के चलाएंगे। नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। पोस्ट ही करना है, प्री करना पड़ेगा। प्री करना पड़ेगा और पोस्ट भी करना पड़ेगा दोबारा, ऐसे है ना। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट ऑफ। It is World Cup time and it's the final time. England versus New Zealand. Mohsin bhai, this is going to be an interest con. दोनों पहली दफा इनमें से जो भी जीतेगा पहली दफा वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। थोड़ी सी तारीख इनकी ये है कि इंग्लैंड जो है वो ये चौथी दफा खेलने जा रहा है फाइनल वर्ल्ड कप का, एक दफा भी नहीं जीता। और न्यूजीलैंड जो है वो 2015 और सेकंड टाइम राउंड अगेन बैक टू बैक दे आर फाइनलिस्ट वन मोर टाइम। पहले तो आपने जो बारिश की खबर सुनाई वो अच्छी नहीं है, फिर ऊपर से डॉक्टर ने कमाल की खबर सुना दी। नहीं, गलत है, डॉक्टर को इतना सीरियस मत लिया जाए। यानी ये बिल्कुल सही खबर है। सेमीफाइनल्स और फाइनल में प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक अगर मैच वॉश आउट हो जाएगा, फाइनल में नॉट फाइनल में भी नहीं, मुश्तरका ट्रॉफी मिलेगी। अच्छा चले, आप दिल्ली मुश्तरका वैसे है नहीं। अगर आप जो कह रहे हैं डॉक्टर, अगर वो तो वही है जो मैंने उस दिन फखर से क्वेश्चन रेज किया था कि पाकिस्तान ने अगर न्यूजीलैंड को हराया हुआ क्वालिफाइंग में तो पाकिस्तान को क्वालिफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे यही कर रहे हैं। अगर इसी किस्म के रूल्स हैं तो ठीक है, मुश्तरका ट्रॉफी इन दोनों
दोनों को दे दें, और चूंकि हमने इन दोनों को पूल स्टेज में हराया हुआ है तो हम भी फिर सबको बराबर हमें भी हिस्सा मिल जाए ट्रॉफी का एक, मतलब ऐसी हो ना, अगर ऐसे ही चल रहा है माहौल तो फिर ऐसे ही चला लेते हैं। देखा कर जाए तो फिर तो मुश्तरका ही होना चाहिए अगर मैच नहीं होता। एनीवे, कमिंग टू द मैच, फकर, इंग्लैंड लुक्स स्ट्रॉन्ग नेम्स टीम ऑन द पेपर के ऊपर तगड़ी टीम है, और न्यूजीलैंड का हम जानते हैं बड़ी तगड़ी होकर खेलती है एज अ टीम। विलियमसन, रॉस टेलर इनके स्टार हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। लेट्स होप कि जिस तरह इन्होंने क्वालिफाई किया है, इट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर गप्टिल, यू नो, इट कुड बी, बिकॉज सारे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर पाया है, तो यहाँ हो सकता है ऊपर वाले ने उसको ये चांस दिया हो कि आओ फाइनल में द क्रंच गेम, तो यहाँ आई थिंक गप्टिल के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा। न्यूजीलैंड की टीम एज अ कॉम्बिनेशन इज अ वेरी गुड टीम, दे डोंट हैव टू मेनी बिग नेम, विलियमसन है, रॉस टेलर है, गप्टिल नो डाउट इज आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन एज अ टीम आई थिंक फकर दे आर अ वेरी गुड टीम। इंग्लैंड का फेवरेट्स हैं टू स्टार्ट विद, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो अपने मुल्क पे खेल रहे हैं, अपने उसके क्राउड पे, वो खैर उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, बल्कि प्रेशर ही पड़ जाता है उल्टा, लेकिन अपनी कंडीशंस में है। न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये कंडीशन उनके लिए डिफरेंट नहीं है, ये न्यूजीलैंड में भी तकरीबन ऐसी कंडीशन होती हैं अगर बारिश वारिश है, तो आई थिंक वी कैन लुक फॉरवर्ड, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मैच होना चाहिए। बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि या तो बारिश रुके, आज ही खेल हो जाए पूरा, ये बड़ा कट डाउन ओवर्स में हो जाए, 40 का ओवर हो जाए, 35 का हो जाए, लेकिन आज ही पूरा मैच हो जाए, तो हम मतलब न्यूजीलैंड छोड़ेगी नहीं वैसे इंग्लैंड को आराम से, इतना मैं जानता हूँ। ये थे, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, छोड़ना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए। Lance, good game of cricket ahead if the rain stops, of course. Wonderful, and wonderful prospect of having a new winner of the World Cup. That really excites me. Yeah, the game's not played on paper, but if you just put the teams together, it just looks like, you know, it's one-way traffic towards England. But you know, World Cup final day, you know, there've been many surprises, and yeah, I'm looking forward to a great game. I just hope New Zealand can stand up and put on a good fight, because if it does become a scrap, I think when it comes to fighting, New Zealand have the edge. Yes, they do. They do. Shoaib, this is going to be definitely a test for New Zealand's bowlers and English batting, which is just absolutely unstoppable at the moment. Not really. I think it's their opener versus their opener. Yeah, again, it's the same thing as semi-final. Yeah. Nichols versus Jason Roy, and Guptill versus Bairstow. And that's where the match needs to be sorted out in the first place and the first hand. I think really, you know, हम सारे ये समझे walk over होगा, ये होगा, this is the team that will actually पेचा डाल सकती है. This is the team actually who can upset this. This is the team actually can make an upset and win the World Cup today. Or I really think that, you know, they are really geared up. I think they have learned their mistakes. They have made sure that, you know, कि कल मैं उनके बयान पढ़ रहा था, reading the statements of the coach. He says, listen, we have allowed Mr. Guptill to lose his arms. Lengthen your arms and play, you know, what you used to play with, you know, the same technique. But don't worry about this elbows coming straight or your footwork is right or no. Don't be technical. Just see the ball, cup, you know, clear your front leg. Right. I think he's the guy. And then, don't get me wrong, यार इनकी भी मिडिल ऑर्डर बहुत तगड़ा है इनका, न्यूजीलैंड का भी. ऐसा नहीं है कि ये आप जान छोड़ देंगे. But all depends on now who's going to win the toss, who's going to be lucky enough to lose the toss. Yeah, lucky enough to lose the toss. That is a good. That is a very good question. Let me correct myself. Would trophy divide होगी? Divide होगी? Divide होगी. तो क्या बीच में से काटेंगे, नीचे से काटेंगे? Both will be the winners. That was only for semi-finals. Rashid bhai was right. So we'll have 2 world champions if the match is washed out. और उसके अलावा England women, they have won 4 World Cups. Yeah, English women have been. There's no question about it. ट्रॉफी की बात कर लेते हैं. ये 2 बनेंगी या एक ही को? एक ही घर एक साल के लेकर रखेगा. 2 साल एक के पास, 2 साल एक के पास. और किसके पास? होम टीम के पास. इंग्लैंड के पास. और बाहर एक बात है, ट्रॉफी नहीं है, दिस इज अ कप. Yes, cup, trophy. नहीं, ट्रॉफी नहीं, दिस इज अ कप. It is a cup. यस. आज हम लोग सबको करेक्शन करने के लिए बैठे हैं. क्या हुआ डॉक्टर स्टार्स को? नहीं सही, बिल्कुल ट्रॉफी नहीं है. नहीं, वो फाइनल में मैंने ये हुआ था. मैंने भी लास्ट टाइम ट्रॉफी कहा था, पर है कप एक्चुअली. नहीं, फकर नहीं बताया था, कप है भाई ये तो. और मुझे राशिद भाई ने बताया था कप है. और बाकी सब कप है. और मैंने राशिद को बताया. सही बात है. Right. So coming back to you, New Zealand, a lot of dependence on Kane Williamson. It has been the Kane show. He has been extremely
very, very composed throughout. He's not very loud in his expressions. He doesn't say much, doesn't do much. Very unassuming character, but he's showing a lot of grit and character when it comes to leading this New Zealand team and delivering the goods, because he's kept the innings together through and through. फखर, सबसे पहले तो केन विलियमसन, मैं सिर्फ कुछ नंबर्स बोलने लगा हूँ. 40, 79, 106 नॉट आउट, 148 Not out. 41, 40, 27 and 67. ये 8 innings हैं. Yep. And he is the only batsman probably on both the teams जो कि फर्क नहीं उसको पड़ता, consistency saturation नहीं आती उस पे. He is consistently consistent because of his method. He starts slow, he assures himself और फिर वो open up करता है. So probably Kane Williamson is going to be a decisive factor for New Zealand. और एक और चीज़ जो important होगी कि इसकी slope की वजह से Lords में इस World Cup में, current World Cup में left arm fast bowlers they have picked 39 wickets at 13.60. So Trent Bolt has a hat-trick last match में, go वो end overs में थी, and Trent Bolt is going to be the master card when it comes to left arm fast bowling on both the sides. Absolutely. England के लिए predicament है कि Bairstow, is he fit or not? Moeen Ali पे they are seriously thinking to have in place of Liam Plunkett or not. So और Morgan की जो 2 statements आई हैं वो ये हैं कि एक तो he's not expecting a tall scoring match और दूसरा he said कि pitch is looking green but it will burn out once the sun comes out, तो ये slow and low होगी. If the sun comes out. So it clearly shows. और दूसरा head to head World Cups में न्यूजीलैंड ने 4 successive matches जीते हुए थे till this preliminary loss जो इस World Cup में. Head to head में न्यूजीलैंड is ahead of England in World Cup cricket. 5 for New Zealand, 4 for England. Overall history में New Zealand is ahead of England in one day nationals 43 and 41. Yes, they so are. New Zealand को आप discount नहीं कर सकते. That is true. Absolutely. Lance, 30% of the runs of New Zealand team this World Cup have been scored by Kane Williamson alone. Yes. Interestingly, they scored their run rate per over throughout this World Cup is around 4.88. Even though they've done a 300 score once, but they've scored at an average of 4.88 runs per over. And Owen Morgan has already said that this is going to be a low-scoring total, or this is not going to be a very big game, this, that, the other, etc., etc. What do you think? How is it going to go, and how importantly would be Kane Williamson's role today? I mean, is it going to be a 40-50 run inning, or is it going to be a 100-run inning for Kane Williamson? Yeah, I think it's going to. I agree with Owen Morgan. I think it's not going to be a 320, 330 game. It's a World Cup final. See a little bit of weather around, and I think the smaller the score, the better it is for New Zealand, because they fight, they scrap, they find a way. If they're batting first, to assess, they assess the conditions very well. They find a way to put a score on the board, and then they scrap. So I think the harder the conditions, the more it's going to suit New Zealand. If it was a real flat wicket with the sun out, I think that powerhouse batting of England would be tough to stop. But the tougher the conditions, look out for New Zealand. Yeah, absolutely. Now the weather, you've dealt with this weather. Your double century was on hold for a long time because of this weather that you have. Yes. So how quickly does Lord's weather, British weather we all know, but in the when you're in Lord's, you're at the home of cricket. This is the place to be in. How much of the weather pressure plays up on the minds of the players? Well, it does play on the minds of the players, but it doesn't play a lot on the pitch. Right. लॉर्ड की जो पिच है वो ये नहीं कि मौसम ऐसा हो गया तो गेंद फ्लाई करना शुरू हो गया. कभी आपने लॉर्ड्स पे ऐसा नहीं देखा होगा. और जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, हालांकि हमारा जो मैच भी होता वो भी क्लाउडी था, ओवरकास्ट था, बीच में बारिश भी हुई, लेकिन फखर इट्स अ ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक. जो फार एंड है, पवेलियन से जो फार एंड है, उस पर हल्का सा एक रिज है जहाँ से कभी कभी बॉल ऑकवर्डली बाउंस कर जाता है. डॉक्टर ने जो स्लोप का जिक्र किया, हल्का सा ऐसे करके स्लोप है, तो है स्लोप है, उससे गेंद लेफ्ट अंदर भी आता है, एडवांटेज होता है. लेकिन जितने भी प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं, जितने भी दोनों टीमों में बैट्समैन हैं, दे ऑल नो द स्टोरी ऑफ लॉर्ड्स एज द बैक ऑफ देयर हैंड. इस तरह लोगों को पता है. तो आई थिंक पिच मौसम का बस एक प्रॉब्लम है. वो जो घास की बात कर रहे हैं मॉर्गन, थोड़ी सी है. आई थिंक दैट विल ओनली वही बात होगी फकर शुरू के 8-10 ओवर जो हिलेंगे वो हिलेंगे. जिसने उसको कंट्रोल किया दोनों टीम में, इधर से जैसे शोएब ने भी बात कही थी 2 ओपनर्स की, लेकिन बेस्टो और जेसन रॉय
carrying a much better reputation than Nichols. गप्टिल का है, गप्टिल का इज अ मैच चेंजर, गेम चेंजर. अगर वो चल पड़ा तो न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा. और विलियमसन का अभी जैसे डॉक ने पढ़ा भी उसकी सारा कुछ कंसिस्टेंसी उसमें इतनी कमाल की है. एंड ही प्लेज फॉर द टीम. ही इज एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन किस तरह बैटिंग करनी है किन कंडीशन में. तो वो तो बड़ा. रॉस टेलर देखते हैं क्या करता है. लेकिन आई थिंक ऑल टुगेदर अगर देखा जाए इनकी बैटिंग में जो दूसरी टीम्स में नजर नहीं आ रहा जो हो रहा था पिछले वर्ल्ड कप तक का कि 7, 8, 9, 10 ऑलराउंडर्स बहुत होते थे. न्यूजीलैंड आर कैरिंग ऑलराउंडर्स फ्रॉम 7, 8, 9, 10 विच विल डेफिनेटली बेनिफिट दैम. इंग्लैंड डजंट हैव दैट. इंग्लैंड के पास सिर्फ बेन स्टोक्स है और बीच में एक और दूसरा ऑलराउंडर आता है. अदरवाइज उनकी जो टेल बहुत लंबी है इंग्लैंड की अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ऑल टुगेदर एज अ टीम आई थिंक इट्स अ डेंजरस टीम. इंग्लैंड को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी इनको हराने के लिए. बिल्कुल सही है. राशिद भाई, एज आपने जो कप्तानी की पाकिस्तान टीम की, कब तक आप एक प्लेयर की परफॉर्मेंस की डिलीवरी का इंतजार कर सकते हैं? गप्टिल की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड कप निकल गया है. आप कब तक जो हैसियत है कप्तान, कब तक बंदा बर्दाश्त कर सकता है? कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको खिलाना पड़ता है. गप्टिल की फील्डिंग आपने देखना है, उसने अपने मौजूदगी का एहसास दिलाया इंडिया के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी. तो वो करना चाह रहा है. लेकिन कल जो मैंने पढ़ा उसने यही बोला कि मैं थोड़ा लेट खेलना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो रही है मुझे क्योंकि उसका गेम नहीं है लेट खेलना. उसका काम है अटैक करना. अटैक नजर नहीं आया. एक मैच में नजर आया अगेंस्ट श्रीलंका जहां पे 137, 36 चेज करने थे. 16 ओवर में मनरो और इन्होंने कर दिए थे. तो ये अपने गेम से हट रहा है. बिल्कुल जो प्लानिंग हुई होगी कि एक विकेट बचा के खेलनी है, इसको अटैक करना चाहिए शुरू से ही क्योंकि विकेट तो गिर रही है. बिल्कुल ऐसे. अगर ये आज डिफरेंट माइंड से आते हैं, अगर पहले बैटिंग होती है ये अटैक करे तो लाइन चेंज करेगा जैसे फिंच और वार्नर करते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ ही की थी क्योंकि उन्होंने आके मारना शुरू किया, वो लाइन पीछे हो गई. तो यही प्रैक्टिस करने चाहिए. बुमराह को इसने क्या किया, लाइन बनाई. अगर 4-5 ओवर आप किसी फारूक को दे दोगे उसकी लाइन सेट हो जाती है, पर वहीं से वो आउट हो गया. मेरे ख्याल से उसको अटैक करना चाहिए. अगर रन नहीं भी बनाता लेकिन फील्डिंग में बड़ा डेंजरस है. हाँ, जहाँ पे भी होता है उसकी प्रेजेंस बिल्कुल फील होती है. एक लाइन ऐड कर दूं गप्टिल के हवाले से. बिल्कुल. राशिद की बात को सेकंड करते, जो भी कोई बैट्समैन होता है अगर उससे रन्स ना हो रहे हैं फकर वो परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, अटैक करूं डिफेंस करूं, अटैक करूं डिफेंस करूं. आई थिंक यहाँ पे बेस्ट काम कौन करता है, जो टीम की मैनेजमेंट होती है ना साथ में, वो उसको गाइड करती है. भला गप्टिल हो या इवन बेस्ट हो या दुनिया का कोई टॉप का प्लेयर हो, हर बैट्समैन मुसीबत में आता है. बैड पैच जैसे पर्पल पैच आता है, बैड पैच भी आता है. तो पर्पल ये बैड पैच के लिए यहाँ टीम मैनेजमेंट के उसके साथ बैठ और उसको बोले गप यू हैव एंजॉयड द होल टूर्नामेंट, तुमसे कोई नहीं हुआ कोई बात नहीं, गो आउट देयर प्ले योर नेचुरल गेम. और राशिद ने सही कहा अटैक करे जो उसका गेम है. आए अपनी ओरिजिनलिटी पे कि मेरा ये गेम है, अटैक करके खेलूंगा, लग जाए तो आई टेल यू व्हाट ही विल चेंज द होल गेम. एब्सोल्युटली. बहुत सारे बैट्समैन जब रन्स नहीं करते ना वो फील्ड में गुमे होते हैं. ये वाहिद बैट फील्डर था पूरे टूर्नामेंट में, नजर आता था. अगर आपको बताऊं तो इसने तकरीबन कल हमने स्टैट्स को देखा था तकरीबन कुल 47 से 58 रन तक बचाए हैं इसने रोक के. तो हाँ ठीक. बट जो उसने रन आउट किया है वो एक्चुअली वर्ल्ड कप में पहुंचाया उसने, फाइनल में. बिल्कुल फाइनल बचाया. ठीक. अब उसको लाइसेंस दिया गया है कि अब आ जाओ अपनी पुरानी गेम के ऊपर. ठीक. ये हो गया. नाउ आई वाज फॉर्चुनेट इनफ amongst all of them that who played the World Cup final at Lords. Right. With the same Yep. conditions, Yep. with the same environment, and we being as an upper hand in the 99 World Cup, as a Pakistan team has to be the most favored one because the talent, the pool of talent that we had, right? So, the pressure or the pressure of to make a right decision, I was, thinking about, for a number of years that I should have, we could have lost the toss and we didn't have to make a decision. Right? Now, I tell you with my open heart, I'm going to say as bluntly as possible to you. The England team bound to make a wrong decision. England team has a more pressure. Their captain is more under pressure than anyone else. Right. अगर कोई इंसानों वाली बॉलिंग करता इन मॉर्गो को राइट फ्रॉम द वर्ड को करता, उसने एक भी परफॉर्मेंस नहीं देनी थी जिस तरह उसने उतारा ना कमिंस को उसके नीचे से. बट अनदर थिंग इज, अगर इंग्लैंड को देखते ना, इंग्लैंड इज जस्ट सो फोकस्ड एंड सो चार्ज्ड अप, सो पम्प्ड
pumped up that we have to finish this one off because हमारी 4 साल की मेहनत है. I agree, but can you take it as a match? Can you take it as a one of game. another game Another of game. the World Cup? Because I really think that, you know, England has a tendency to bog down in a biggest situation of such as Wimbledon. yes. They'll start crying, and this is another situation is coming up for England where they have to show their characters, not their batting, not their abilities, not their talent. It is their pressure, ability to take pressure as a captain. But that's where I think he's got a bit of a sport of Johnny Bairstow and Jason Roy. What if they don't perform? Yeah. How are you going to come back in the match? True. That is the biggest question they should be asking to themselves. अभी तो कह रहे हैं Bairstow कर देगा, Jason Roy कर देगा, but agreed. But what if they don't? You have a safest bet on Joss Butler, you have a safe bet on Ian Morgan, but you gotta bring Moeen Ali into it. But at the same time, अगर other side देखो New Zealand की, they are actually dying to do well. और वो कम प्रेशर लेंगे. क्राउड इंग्लैंड का है, मुखालिफ इनके हैं. They are more focused. And what if they tend to make a right decisions by winning a toss? Then what? Then we have a game on. Then we have a new leader in the अगर world. इन्होंने मार्टिन गप्टिल की बात की है, but मार्टिन गप्टिल का ओवरऑल रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के अगेंस्ट प्रिकेरियस है. He's only played 9 one-day It doesn't nationals. say. It doesn't tell you the whole story. I have seen many players that Mr. Lance Closer would not be able to even strike a ball to me, but under the day he is just making 70 out of 25 balls. Yeah. So, You never know. this history is like that's gone in a day. Yeah. It is time for history and we'll find out. But right now, दोस्तों, टेलेनॉर की तरफ से आप लोगों से सवाल पूछा गया था. Name the world's fastest bowler. दुनिया के तेज तरीन बॉलर का नाम बताएं. और एक्चुअली उनका नाम जो है शोएब अख्तर है. शोएब अख्तर है. और शोएब अख्तर सही जवाब देने वाले हमारे दो दोस्त हैं जिनको इन्फिनिटी i5 फोन मिलेगा. अली यार खान इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, बहुत मुबारक हो. और अताउर रहमान खान पेशावर से आपका ताल्लुक है, आपको भी बहुत मुबारक हो. अली यार खान एंड अताउर रहमान, इस्लामाबाद से अली यार खान, अताउर रहमान. और दोस्तों आप भी जीत सकते हैं इन्फिनिटी i5. आज आखिरी 2 फोन हम देने लगे हैं कि मैच के बाद हम बताएंगे आपको. सवाल आप लोगों से ये कि नेम द सिटी वेयर 1992 वर्ल्ड कप फाइनल वाज हेल्ड. 1992 का वर्ल्ड कप किस शहर में हुआ था उसका नाम आपने बताना है. और 2 जीतने वालों को आपको मिलेगा इन्फिनिटी i5. और साथ में दोस्तों आप लोग जो है वो इजी डील्स मोबाइल एप्लीकेशन, थैंक यू सर भाई, इजी डील्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और खेलने के लिए तैयार हो जाइए. आज मैच के बाद जो है वो हम हिमानी की तरफ से 1000 सीसी की गाड़ी का भी सवाल आप लोगों से करेंगे. इस वक्त इजी डील्स मोबाइल ऐप पे आप लोगों से सवाल है करीम के 5000 करीम क्रेडिट्स के लिए. और सवाल यह है कि इन हाउ मेनी डेज डिड फखरे आलम, व्हिच इज मी ऑफ कोर्स, कंप्लीटेड द सर्कमनेविगेशन ऑफ द एंटायर ग्लोब. ये सवाल है आपसे कि मैंने जो सर्कमनेविगेशन की थी पिछले